in front of you with information on Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an embodiment of all that is progressive about India's socio-cultural, political and economic identity. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav commences on 12 March 2021, which starts a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on 15th August 2023. Today, we are conducting virtual morning assembly in our Vidyalaya. In this context, I am inviting Sana Khan of class 10B to present her speech. Good morning, everyone. I am Shana Khan, student of class 10B, presenting here the role of freedom fighters in Indian independence. Our freedom fighters made sacrifices which cannot even imagine of doing for their loved ones, leaving alone the country. The amount of pain, hard work they were faced cannot put into words. Either the generation will always be indebted to them for their selfless sacrifices and hard work. Most importantly, our freedom fighters inspired and motivated others to fight against injustice. They are the pillars behind the freedom movement. They made people aware of their rights and their powers. It's all because of freedom fighters that we prosper into a free country. At last, I would like to say that freedom fighters made our country what it is today. Let's come together and pay tribute to freedom fighters. Now I am inviting Pianshi of class 8A to present her poem. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशी अग्रवाल केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। करने आए हैं हम नमन, करने आए हैं हम नमन उन बलिदानी वीरों को, करने उन बलिदानी वीरों को, करने आए हैं हम नमन उन बलिदानी वीरों को। चल पड़े अंगारों पर जो, चल पड़े अंगारों पर जो, करने अत्याचारों का दमन, चल पड़े अंगारों पर जो, करने अत्याचारों का दमन। उम्र न पूछो धन न पूछो, उम्र न पूछो धन न पूछो, उन मिट्टी के रखवालों की लहू बहाया धरती पर, लहू बहाया धरती पर जैसे गंगा का पावन जल। नहीं रुके थे, नहीं झुके थे, नहीं रुके थे, नहीं झुके थे, वीर अमर बलिदानी थे। कोई नरम थे, कोई गरम थे, कोई नरम थे, कोई गरम थे, आजादी के परवाने थे। लटक गए फांसी पर, लटक गए फांसी पर, मुंह से उफ तक ना निकाली थी। कतरा कतरा बहा खून का आजादी दिलवाई थी, कतरा कतरा बहा खून का आजादी दिलवाई थी। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, Pianshi. Now I am inviting Prashant of class 12A to present her song. नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा कक्षा 12वीं का छात्र केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा से आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए, यह है देशभक्ति गीत। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नखों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, हम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से ही थे निकले बांधे थे सर पे कफन, जहाँ पेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। ऐ शहीदे मुल्क में अब मैं तेरी यूं भर निशान, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद।
Thank you, Prashant, for such a beautiful song. Now I am calling Tanisha Singh of class 9B to present her paper reading. A very warm good morning to all present here. I am Tanisha Singh, student of class 9B from KV Bad Mathura. So here I am going to present a speech on one of the greatest freedom fighter of Indian history on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. I think this quote must have reminded you all. One of the greatest freedom fighter of Indian history, Bhagat Singh. Shahid Bhagat Singh was born on 28th of September 1907 in Punjab. He was born in family of freedom fighters. Being born and brought up such in family, being born and brought up such an environment always inspired him to uproot the Britishers from India. He died as a martyr at a very young age of 23. He was a revolutionary leader and contributed to the Indian freedom struggle. He wrote articles for Kirti Kisan Party's magazine. He founded Naujawan Bharat Sabha in 1926 and raised the slogan of Inqilab Zindabad. He infamously killed a British officer and was executed on March 23, 1931, along with fellow comrades Rajguru and Sukhdeva. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Tanisha. Now we conclude this by the Jaikara of Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. Jai. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai.